Dear students, in this topic we will be discussing about theory base of accounting. Theory base of accounting. Accounting information users need the informations which are reliable, relevant, comparable, understandable. Means for making accounting information meaningful to its users, these information should be based on consistent policies, principles and practices. To have the above four qualities in a good accounting information system, we need some policies, principles and practices to be followed. And in this slide, we will be discussing about these principles, policies and practices. We will be discussing about the accounting principles and standards. In our country, India, Institute of Chartered Accountant of India, ICAI, is a regulatory body, and it is the body who establishes standards of accounting principles in India. American Institute of Certified Public Accountant has defined the term principle as a general law or rule, adopted or professed, have been developed which are generally accepted by the accounting professions. GAP principle have been evolved over a long period of time on the basis of past experiences, usage or customs statement by individuals and professional bodies and regulatory bodies of government. These principles are also referred as concepts and conventions. These are generally accepted accounting principles, GAP, G-A-A-P. The basic accounting concepts or principles are business entity, money measurement concept, going concern, accounting period, cost या historical cost principle, dual aspect, revenue recognition या realization, matching principle, full disclosure principle, consistency, conservatism ये जिसको prudence भी कहा जाता है, maturity, objectivity. Business entity concept. Business has a distinct and separate entity from its owner. It means that for the accounting purpose, the business and its owner are the two separate entities, and their separate accounts are to be prepared. Amount invested by the owner is to be treated as the liability of business towards its owner. Means owner and business are two separate distinct entities having their separate identity. Money measurement concept. It states that only those transactions or events of the organization which can be expressed in terms of money can be recorded in the book of accounts. Means record of the transaction are to be kept in monetary unit, not in physical unit. यानी हम केवल किसी ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड कर पाएंगे जब उसको हम मनी में मेजर कर सकते हो, और उसकी मनी की जो यूनिट है, कितने रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, हम वही रिकॉर्ड कर सकते हैं. उसकी फिजिकल यूनिट कितना बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ ये नहीं कर सकते. उसकी साइज को भी हम मनी में ही मेजर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. It assumes that a business firm would continue to carry out its operations indefinitely. Means for a longer period of time and would not be liquidated in the foreseeable future. यानी हम जब अकाउंट्स बनाते हैं तो ये सोच के बनाते हैं कि यह व्यापार लंबे समय तक चलेगा एंड आसानी से या निकट भविष्य में ये समाप्त नहीं होगा. Accounting period concept. It refers to the span of time at the end of which the financial statements of an enterprise are prepared. Normally, for a period of 1 year, accounts are prepared. This time interval is called accounting period.
यानी जिस समय अवधि के लिए हम अकाउंट्स बना रहे हैं, दैट समय अवधि, दैट ड्यूरेशन फॉर विच वी आर प्रिपेयरिंग अकाउंट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड. Companies Act 2013 and the Income Tax Act requires that the income statement should be prepared annually. अब हमारे सामने ये एक लीगल रिक्वायरमेंट भी है कि हमें एनुअली अकाउंट प्रिपेयर करने चाहिए. कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. It states that all assets are recorded at their purchase price, including cost of acquisition, transportation, installation, and making the asset ready to use. This concept also states that the asset will be recorded on the cost which has been paid on the date of acquisition and does not change year after year. हमने कोई एसेट जिस कीमत पर प्राप्त की है और उसको यूजेबल बनाने में जो हमारा खर्चा हुआ है, उस सबको मिलाकर जो हमारे को कॉस्ट उसकी पड़ी है, हम उस कॉस्ट पर उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं. और ऐसा नहीं प्रति वर्ष हम उसको चेंज करें, हम ऐसा नहीं करते हैं. ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. एवरी ट्रांजैक्शन हैज द ड्यूअल और टू फोल्ड इफेक्ट एंड शुड देयरफॉर बी रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस. एट लीस्ट two accounts will be involved in recording a transaction. यानी हर ट्रांजेक्शन को हम दो जगह पर रिकॉर्ड करेंगे. एंड उसका रिजल्ट ये होगा कि हमें एक अकाउंटिंग इक्वेशन मिलेगी, यानी हमारी टोटल एसेट्स विल बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स फंड, जिसको हम कैपिटल कहते हैं. रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट. It states that revenue for a business transaction should be included in the accounting records only when it is realized or a legal right to receive it arises. हमें सेल्स का ऑर्डर मिला तो वो सेल नहीं मानी जाएगी. जब हम एक्चुअल में सेल कर देंगे, हम तभी उसको सेल मानेंगे. अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. There are some exceptions to this general rule. For example, in case of contract like construction work, which takes longer period, maybe 2, 3, 4 years to complete the work, hence proportionate amount of revenue is treated as realized. Similarly, on hire purchase, the amount collected on installment is treated as realized. यानी इन केसेस में जितना पैसा हमें मिल गया या जितना काम हमने कंप्लीट कर दिया, उसको ही हम सेल या रिवेन्यू रियलाइज्ड मान लेते हैं. Matching concept. The matching concept emphasizes exactly that the revenue and expenses incurred to earn these revenue must belong to the same accounting period. यानी जिस रेवेन्यू को प्राप्त करने का खर्चा जिस समय पर हुआ है, उसको उसी के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए. It implies that all revenue earned during an accounting year, whether received during the year or not, and all costs incurred whether paid during the year or not, should be taken into account while ascertaining profit and loss of that period. यानी किसी टाइम पीरियड की इनकम और एक्सपेंडिचर, भले हमें मिले हो या ना मिले हो कैश में, हमने दिए हो या ना दिए हो कैश में, बट दैट शुड बी अकाउंटेड फॉर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ दैट पीरियड. फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट. It requires that all material and relevant facts concerning financial performance of an enterprise must be fully and completely disclosed in the financial statement and into their notes. जो भी आवश्यक जरूरी सूचनाएं हैं किसी भी ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई, वो हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जो भी हम रिकॉर्डिंग जहां भी कर रहे हैं, वहां पर हमें उनको पूरी तरह से बताना चाहिए. कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट. दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट एंटरप्राइज शुड फॉलो यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस consistently over the period of time. Consistency does not prohibit change in accounting policies. Necessary changes are fully disclosed by presenting them in the financial statement. Means
हम जो भी पॉलिसीज को अपनाते हैं हम उनको लंबे समय तक सेम पॉलिसीज को अपनाएं, क्योंकि हमें कुछ जगह पर ऐसी छूट मिलती है कि हम अपनी आवश्यकता अनुसार पॉलिसीज को चेंज करके अपना सकते हैं, बट जो भी हम पॉलिसी अपनाते हैं उसको हमें लंबे समय तक कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसा नहीं हम चेंज नहीं कर सकते, हम चेंज कर सकते हैं, बट अगर हम चेंज करते हैं तो उसके बारे में हमें पूरी जानकारी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करनी चाहिए, बतानी चाहिए। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस प्रोवाइड guidance for recording transactions. It refers that profit should not be recorded until realized, but all losses including possible are to be provided in the book of account. I am using word all losses including possible are to be provided in the book of account. यानी सभी losses के लिए हम व्यवस्था करके चलते हैं, चाहे वो हुए हैं या संभावित हैं। Materiality concept. Materiality concept states that accounting should focus on material facts. Efforts should not be wasted in recording and presenting facts which are immaterial in determining profit of the organization. यानी जो चीजें काम की नहीं है उनको इम्पोर्टेंस ना दी जाए। Objectivity concept. It requires that accounting transaction should be recorded with an objective manner, free from the bias of accountant and others. Each transaction should be supported by verifiable documents or voucher. Means कोई भी ट्रांजैक्शन जब आप रिकॉर्ड करें तो आपके पास उसके लिए वेरीफाइबल सपोर्टिव डॉक्यूमेंट या वाउचर होना चाहिए, जिससे आप वेरीफाई कर सकें कि दिस ट्रांजैक्शन हैज हैपेंड। Accounting standards. Accounting standard is an authoritative statement issued by Indian Institute of Chartered Accountants (ICAI) to bring uniformity in different accounting policies in financial statement of an enterprise. मैंने शुरू में बताया इस स्लाइड के अंदर कि हमारे देश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो हमें समय समय पर अकाउंटेंट्स को एडवाइस करता रहता है, स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता रहता है, एंड उसका पर्पस होता है यूनिफॉर्मिटी इन डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेस। नाउ क्वेश्चन, व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट covering the aspect of recognizing, measurement, treatment, presentation and disclosure of accounting transaction in financial statement. Accounting standard is applicable to sole proprietorship firm, partnership firm, societies, trust, undivided Hindu family business, association of persons, cooperative societies, companies. International Financial Reporting System (IFRS). With the emergence of globalization, liberalization and privatization, the trend towards global convergence of accounting standard is seeking momentum for international financial reporting system. जब हम ग्लोबलाइज हो रहे हैं तो ऐसे में हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी देखना होगा, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम के अनुसार कुछ स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज हैव एग्रीड टू अप्लाई, गिवन बाय द IFRS, बट IFRS हैज बीन कन्वर्ट एज IND-AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IND-AS. And this IND-AS is accounting standard notified by Ministry of Corporate Affairs in our country. That's all regarding the theory base of accounting. Thank you very much.